ठीक है, we're going to try and do 9701. This is 22 और May June 2020 का है, ठीक है. This paper, the first question. So can I explain what is meant by the term relative atomic mass? So we're going to try and define that. Relative atomic mass के बारे में याद रखना कि uh, the two things. Okay, it's the average. ठीक है, remember it's the average mass of an atom. So atoms की जो mass होती है ना वो it's not identical. You have lots of isotopes. तो आप average लेते हो, average mass of an atom of an element, और उसको compare करना है compared to carbon 12 isotope. So all masses are compared with carbon 12. तो relative mass होती है, ठीक है, relative to carbon 12. Reba, is this clear? Yeah. And then you're supposed to find the relative atomic mass of gallium. And you're supposed to give the answer to 4 significant figures. तो यहाँ पे दिया हुआ है gallium के ना there are two isotopes. One is 69, the other one is 71. So what's the formula for finding relative atomic mass AR? Okay, it's basically you just sum up everything. The isotopic mass, ठीक है, average लेनी है. Isotopic mass multiplied by its percentage abundance. And that should be divided by 100 fractional percentage. और उनको sum up कर लो. तो ऊपर gallium का एक isotope है, that's 69. And the percentage is 60.11%. तो उसको आप multiply कर दो 60.11% divided by 100 से. Plus sum the other one. The other isotope is 71. And its percentage is given as 39.89%. to 39.89%, and this would be divided by 100. Can you do the calculation and tell me what the answer is? And it should be accurate up to 4 significant figures. 69.8. The 4 significant figures, 69.8 what? 80. ठीक है, it's 80. Anyways, complete the table which describes a gaseous atom of gallium. अब इसके लिए पहले तो वो चाहिए total number of electrons in lowest energy level, type of orbitals which contain the electron in the highest energy level. पहले तो इसको गैलियम को जाके वो देख लेते हैं. Let's open the data booklet 9701. ठीक है, let's quickly open it. And open the periodic table which is here. अच्छा, इसमें गैलियम देखो कहाँ पे है. गैलियम is over here. अच्छा, गैलियम is given as the atomic number is given as 31. तो वापस जाओ और इसकी full form लिख लो. This particular isotope that we are talking about, this is 31. And अब इसका आगे बताओ कि न्यूक्लियर नंबर क्या होगा. I mean, what is the nuclear number? 40. The nuclear number is this one. ठीक है, 71. ठीक है, clear? Yeah. अच्छा, remember this कि nuclear number is always a whole number. ये हमेशा whole number होगा. Nuclear number is the number of protons plus neutrons. ठीक है. और relative atomic mass जो है ना, मतलब यहाँ पे उसने 71 दिया हुआ है. और ये याद रखना, डिफरेंशिएट करना. relative atomic mass is कहाँ पे गैलियम, यहाँ पे 69.7 दिया हुआ है. ठीक है, this is what I'm highlighting. तो relative atomic mass is the average mass of the atoms. तो it's usually not a whole number, it's in decimals. और mass हमेशा decimal में होती है. जब आप ट्रांसलेट करते हो ना कि प्रोटॉन की जो रिलेटिव मास है 1 है, वो it's not exactly 1. तो always remember nuclear numbers are always whole numbers. मतलब you can't have half a neutron or 0.1 neutrons. Reba, is this clear? Yeah.
अच्छा, 31 किया वो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी कन्फिग्रेशन? इट्स गोइंग टू बी 1s2, then 2s2, 2p6, 3s2, then you would have 3p6, और उसके बाद क्या होगा? 3d और 4s आ जाएंगे, and it would be मतलब 4p तक चला जाएगा. कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए अभी तक? 3p6 तक it is 18 electrons, so you would have 2 electrons in the 4s, then you would have 10 electrons in the 3d. That would make it 30 electrons. ठीक है, that's a total of 30 electrons now. और 31 जो होगा that would be 1 electron over here. ठीक है, so अब क्वेश्चन ये कि वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल. तो लोएस्ट एनर्जी लेवल कितना है? इट्स 1s. 2. ठीक है, so that's 2 electrons. As a type of orbital which contains the electron in the highest energy level. तो टाइप कौन सी है? इट्स 4p. नहीं, क्या चीज? 4p. ठीक है, या 4p लिख लो, ज्यादा बेहतर है. अच्छा, अगला पार्ट. When gallium is heated in excess, chlorine gallium trichloride is made. Draw the shape of gallium trichloride. Gallium के outer shell में कितने इलेक्ट्रॉन है? If you look over here, its outer shell has 3 electrons. क्या शेप होगी गैलियम ट्राइक्लोराइड की? Well, it's making 3 bonds, and that's Trigonal. ठीक है. ट्राइगोनल प्लेन है, तो वो शेप बनाने को कहा था उसने. हाँ, शेप मॉलिक्यूल कहा था. So it's going to be gallium trichloride and all the bond angles are going to be 120 degrees. शेप का नाम भी लिख देते हैं कि this one is trigonal planar. अच्छा, then the next one. Gallium oxide and aluminum oxide react in the same way with HCl and with NaOH. Suggest the equation of with HCl. So, well, basically he's asking for the equation of aluminum oxide with HCl. क्या प्रोडक्ट बनता है? Aluminum chloride and H2O. ठीक है, and H2O, and you can balance this equation. It would be 2 and this would be 6 and this would be 3. अच्छा, do you remember this is inorganic chemistry के गैलियम ऑक्साइड बल्कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही कर लेते हैं. एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद NaOH. इसका क्या होगा? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स था. ठीक है, I'll just quickly go through all the oxides. The first two oxides, sodium oxide period 3 के and magnesium oxides, they were basic. तो उनका जो रिएक्शन होता था simple. If you react it with HCl, it would simply produce salt and water, right? ठीक है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे आता था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाज एम्फोटेरिक. इसका मतलब होता था कि it would produce a salt, and the salt would be NaAlO2 plus H2O. ठीक है, you have to remember this equation. अच्छा, तो Al2O3 was amphoteric. उसके दोनों रिएक्शंस होते थे. फिर SiO2 पे जब बात आती थी ना, the next one, this was actually slightly acidic. ये फिर रिएक्ट करता था NaOH के साथ भी. सिमिलर रिएक्शन होता था. It had no reaction with acids. तो सेम चीज बनती थी, सोडियम सिलिकेट बनता था. तो Na, अच्छा, SiO3, Na2SiO3. इसको मैं देख लूं कि ये ठीक है. तो Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर बनता था. और उससे नीचे जो ऑक्साइड्स होते थे वो फिर एसिडिक होते थे. वो फुली एसिडिक होते थे. दे वुड ओनली रिएक्ट विद NaOH, और वो सॉल्ट्स बनाते थे. इसमें सोडियम सल्फाइड बन जाता था. और फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स होते थे ना, P4O10, they would also react with NaOH और फॉस्फोरिक एसिड. आपने P4O10 को फॉस्फोरिक एसिड सोच के ना लिखनी है इक्वेशन.
So it would form Na3. बल्कि एक चीज इसमें गलत होगी है कि P4O10 जो होता था फॉस्फेट बनाता था. So Ariba, is this clear? Yeah. ठीक है, इनका बस याद रखना है कि ये जो बीच वाले दो है ना, नॉट बीच वाले दो, not both of them, only aluminum oxide. That was actually amphoteric. ठीक है. अच्छा, अगला question है, write an equation for the to show the reaction that's occurring in stage 1. तो stage 1 की ने this nitric acid being made, तो कह रहे हैं ammonia is oxidized by oxygen. तो क्या होगा, ammonia plus oxygen to form सब कुछ ही दिया हुआ है, ठीक है. So it's going to form nitrogen monoxide and water. अच्छा, ये लिखा हुआ है, बस और तो कुछ नहीं है, ठीक है. अच्छा, one thing that has to be, you can either balance it the normal way, लेकिन you have to check whether, since it's a redox reaction, when you're trying to balance this, make sure to check the number of electrons that are lost and that are gained, are they equal or not. ठीक है, you would have to check for that. कि N की oxidation state यहाँ पे क्या है, ये H+1 है, तो this would be -3. N की oxidation state यहाँ पे क्या है, ये -2 है, this is +2. तो Reba, how many electrons did it gain or lose? 5. ठीक है, and it lost 5 electrons, right? Yeah. अच्छा, oxygen was 0 over here, and over here, like in all these places, oxygen is -2. ठीक है, तो oxygen मतलब products के अंदर जब change हो रहा है ना, तो it's going to -2, so that means it's gaining 2 electrons. ठीक है, मैंने इन दोनों को इकट्ठा ही consider किया, ठीक है. Like whatever oxygen there is, all of them change into -2, so they're gaining 2 electrons. तो equal करने के लिए I would have to multiply this by, I think, 2 and multiply, तो ये इसको double कर लो. ठीक है, इसको हम डबल कर लेते हैं. I'll multiply this by 2. और ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से. तो इसका मतलब है, जस्ट 1 सेकेंड, पेज अप. अच्छा, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है 5 से, सो दैट मीन्स दिस वुड बी 2.5, राइट, ताकि वो 5 ऑक्सीजन हो जाए. अब 5 ऑक्सीजन इस साइड पे भी होने चाहिए. 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे पहले ही हैं, तो इधर कितने होने चाहिए, देयर शुड बी 3 ऑक्सीजन ओवर हियर. ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट वुड बी इक्वल. हाइड्रोजन भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, इज दिस क्लियर, अलीबा? Yeah. वो बाकी बस वो करना है कि 2.5 होना नहीं चाहिए, डेसिमल्स भी नहीं होना चाहिए. So make it whole numbers, multiply everything by 2, so this would become 4, this would become 5, this one would become 4, and this one would become 6. So now the equation is balanced. अब फिर वो कह रहे draw the dot and cross diagram for ammonia, so you can pretty much do this. इधर क्या करें, in the boxes given oxidation numbers of nitrogen, oxidation numbers लिखने, तो ये तो +4 है क्योंकि O is -2. This would be +5, this is plus or minus +2. ठीक है. Explain why the reaction in stage 3 is described as a disproportionation reaction, include reference to electron transfer. Disproportionation कौन सा reaction होता है कि जिसके अंदर over here electrons are being lost and over here electrons are being gained. I mean, 2 electrons are being gained. तो बस वो बताना है कि disproportionation is the reaction where the same element gets oxidized and reduced at the same time. और वो उसकी फिर रेफरेंस दे दो कि ये रिडक्शन भी है
और वो ऑक्सीडेशन भी है. अच्छा, ये वाला, the release of nitrogen monoxide in the atmosphere, still explain the effect of nitrogen monoxide in contact with moist air. तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन कांटेक्ट विद एयर, क्या अरीबा क्या इक्वेशंस होंगी? Reacts with oxygen. ये क्या बनेगा? विद मॉइस्ट एयर ना, तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? Nitrogen monoxide. नहीं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो है, इट्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड वाटर, तो वैसे ही गेस करो क्या प्रोडक्ट होगा. मतलब एसिड रेन प्रोड्यूस होती है ना, नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस वे. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस, और इसको बैलेंस कर लो तो हाउ वुड यू बैलेंस दिस? टू नाइट्रोजन्स. तो अच्छा, नाइट्रिक एसिड होगा या you can balance this. It's क्या है ये यहाँ पे, the two nitrogens, there should be two nitrogens over here, तो hydrogens balance हो गए. And how many oxygens should I have? I should have 6 oxygens, so there's one oxygen over here, there two over there, so that's 3. तो यहाँ पे भी 3/2 होना चाहिए. ठीक है, now it's balanced. ये clear है ये part? Yeah. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो. वो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम पता करना है. And you're supposed to make how much? You're supposed to make 40 tons of ammonium nitrate. तो उसका वॉल्यूम जाके पता करो कि कितना वॉल्यूम चाहिए. Try and do the calculation. So the first thing is कि उसके मोल्स निकालें कि कितना है, 40 टन्स. तो 40 टन्स कितने? मुझे रेशियो लगाया ना, 40 टन्स ग्राम्स में करने. Reba, did you convert it into grams? Yeah. The bottom bit. ठीक है, just remember it's 10 power 6. ठीक है, 10 power 6 से multiply कर लो, that's grams. ठीक है, remember that. अच्छा, anyways, this is the amount. This is the amount that needs to be formed. जरा वापस ऊपर जाए, कहाँ पे गया हमारा क्वेश्चन? अच्छा, this is the moles that moles कितना है ये? Did you calculate the moles? Like how much ammonium nitrate do you need to form? I didn't write it down. अच्छा, जो divide by 80 की है. Yeah. ठीक है, and why did you multiply it by 24? अच्छा, 24 DMK. you did write down the moles. 40,000 divided by 80, that was 50, I think 500,000 moles. This came out to be 500,000 moles, right? तो Yeah. Yeah. अच्छा अच्छा, अब यहाँ से ना स्टेप बाय स्टेप ना कि मैं वो देख लूँ कि तो नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड इज आल्सो गोइंग टू बी 500. कितने जीरोस हैं? 3, आई थिंक दे आर 5 जीरोस. हाँ, अच्छा, नाइट्रिक एसिड की भी 500,000 मोल्स हो गए. और ये नाइट्रिक एसिड पिछले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था, तो दैट्स वेयर ऑल द 500,000 मोल्स आर कमिंग फ्रॉम, राइट? तो उनको इनटू 3 डिवाइड बाय 2 किया, दैट्स फाइन. और फिर 24 DMQ से मल्टीप्लाई कर लिया. जस्ट मेक श्योर ये चेक करना मस्त था कि एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ओनली देन यूज 24 DMQ, राइट? सो योर फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 180. फिर कितने जीरोस हैं? 3, 6. 1, 2, हाँ ठीक है, दैट्स 3 एंड zeros. This is the TK. Your answer is correct. What's the use of ammonium nitrate? A simple question. It's an O-levels question. I mean, it's a fertilizer. TK. Remember nitrogen, phosphorus, and potassium salts.
which are soluble, ठीक है, soluble ones, they are used as fertilizers, especially ammonium and nitrates. ये बात clear है? Yeah. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मूव कर लो कि सुक्रोज का मॉलिक्यूल दिया हुआ है. There's suggest name for this type of reaction. What's happening? Can you? अच्छा, it's reacting with water. Do you know what's the name of a reaction where you react something with water and it breaks down? Hydrolysis. ठीक है, this one is hydrolysis. It then states, explain in detail why glucose and fructose are a pair of structural isomers. Your answer should refer specifically to these two molecules. Okay, why are they structural isomers? I mean, what's a structural isomer? Have the same molecular formula. Hmm? Have the same molecular formula. ठीक है, so they have the same molecular formula. अब उसने कहा था कि इनको refer करो, ठीक है, तो मतलब you can find out the molecular formula कि both of them have the same number of carbon atoms. You have to actually check. तो 1 2 3 4 5 और 6 और इसके कितने 1 2 3 4 5 and 6 carbons. So you can give the molecular formula, but they have different structural formulas. ठीक है, which is why they are isomers. डिटेल पता नहीं क्या रिक्वायर्ड थी जो इसने 3 लाइनें दी हुई हैं, ये लिखना होगा. अच्छा, reaction A occurs faster in the presence of an enzyme. This is reaction B. The activation energy for reaction B is plus 29. Predict a value of the activation energy of reaction A. Predict करनी है, ठीक है, which means don't give a value. Reaction B जो है ना वो faster है, तो उसकी activation energy दी हुई है. तो reaction A जो कि slower है उसकी क्या होगी? 18. हम्म 18. कितना? 18. 18? Yeah. नहीं, रिएक्शन ए स्लोअर है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? स्लोअर की होती है वो हायर एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, तो इट्स गोइंग टू बी लेट्स से 60 किलो जूल्स पर मोल. Anybody you get this? Yeah. अच्छा, फिर वो कह रहा है कि रिएक्शन ए की इंथैल्पी चेंज जो है ना वो -14 है, तो रिएक्शन बी की इंथैल्पी चेंज क्या होगी? एक वो हिंट दे देता हूँ कि बोथ द सेम रिएक्शंस, बस एक में एंजाइम डला हुआ है, एक में एंजाइम नहीं डला हुआ. What does an enzyme or a catalyst do? Speed up the reaction. हाँ, लेकिन अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स देखूं, ठीक है, let's say let's pick one कैटलिस्ट के साथ वाला. एक सेकेंड, ठीक है, with a catalyst. ठीक है, if I have a look, ये वाला. अब मुझे बताओ कि क्या फर्क पड़ता है कैटलिस्ट से? The only difference is the activation energy is less. इंथैल्पी चेंज जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो तो एग्जैक्टली सेम रहती है. इज दिस क्लियर? Yeah. तो इसका मतलब है कि रिएक्शन बी इज आल्सो गोइंग टू बी -14. ठीक है, इंथैल्पी चेंज कभी भी चेंज नहीं होती. बाय एडिंग अ कैटलिस्ट यू ओनली रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी. अच्छा, स्केच एनर्जी लेवल उसने डायग्राम ही मांगा हुआ है कि स्केच करो. तो इज इट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो -14 है. यस, इसका मतलब है रिएक्टेंट्स आर गोइंग टू लूज एनर्जी.
and जिसको बस सी कर लेते हैं. These are my products, and these are my reactants. इसमें लेबल क्या करना है? इसमें एक तो लेबल करना है वो, ठीक है. ये क्या होगा? This is going to be, इसको और थोड़ा नीचे कर ले. This would be the delta H, which is minus 14 kilojoules per mole, right? That's, और फिर यहाँ क्या होगा? ये this would be your activation energy. और सेकंड रिएक्शन बी का करना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी उससे दी हुई थी. एक्टिवेशन एनर्जी जो थी दैट वाज, कितनी वैल्यू थी एक्टिवेशन एनर्जी की? इट वाज गिवन एज 29. तो ये आप लेबल कर दो, दिस वुड बी 29 किलोजूल्स पर मोल. और अगर वो साथ ही रिएक्शन ए की बात करेगा ना, तो वो रिएक्शन ए जो होगा दैट वुड बी हायर अ लॉट, ठीक है. इट्स गोइंग टू बी हायर. उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी ना वो और भी ज्यादा होगी, ठीक है. दैट वुड बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. इज दिस क्लियर? Yeah. अच्छा, अगला क्वेश्चन इज 1 gram of sucrose जो है is completely combusted. The heat produced is used to increase the temperature of 250 grams of water inside a calorimeter from 25 to 40. Explain what is meant by the term enthalpy change of combustion of sucrose. What's the definition of enthalpy change of combustion of sucrose? 1 mole of sucrose burns in 1 mole of oxygen. And it's always energy released, ठीक है. नहीं, 1 mole of sucrose is burned in, 1 mole of oxygen. नहीं, when 1 mole of sucrose के 1 mole होने चाहिए, is completely burned in excess oxygen. And whatever the products are, ठीक है, measured under standard conditions. अच्छा, इसके बाद क्या है? Use the data to calculate the enthalpy change in kilojoules per mole for the combustion of sucrose. Assume that all the heat energy produced is transferred to the water, showing your working. तो जरा इसका बताओ कि enthalpy change for the combustion of sucrose. Remember कि combustion of sucrose जो है ना वो अपने end में 1 mole के लिए calculate करना है. Try and do the calculation. Everything is given.